तो चलिए शुरू करते हैं ऑडिट का चैप्टर 2 का रिवीजन। चैप्टर 2 हम लोग पहले चैप्टर 1 कंप्लीट किया है। चैप्टर 1 में हम लोग पढ़े थे एसे 200 विया कासा, जिसमें ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, इस पे चर्चा किए थे। ऑडिट क्या होता है, ऑडिट को छोड़ के प्रैक्टिशनर और क्या क्या एश्योरेंस दे सकते हैं, रिव्यू एश्योरेंस, एश्योरेंस प्रोवाइडिंग engagement related to prospective financial statement, internal control and etc. आज हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 में ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। इस चैप्टर में एक ऐसे है, इसे 300 प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, इसे 300। तो कुछ टॉपिक आज जो डिस्कस करने वाले हैं, कुछ टॉपिक मैंने लिख रखा है, तो वो एक एक करके रिवाइज करते थे। एसे 300 ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। एज पर एसे 300 ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑडिट इज परफॉर्म्ड इन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। ऑडिट इज परफॉर्म्ड इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। This is the objective of auditor as per SA 300। फिर से बोलिए, audit is performed in effective and efficient manner। Next, involvement of key engagement team member। इन्वॉल्वमेंट ऑफ की एंगेजमेंट टीम मेंबर। ऑडिट सिर्फ एक आदमी नहीं करता है, उससे एक ऑडिट टीम होता है। तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ की एंगेजमेंट टीम मेंबर, की एंगेजमेंट जो लोग इम्पोर्टेंट है, एंगेजमेंट पार्टनर, कोई सीनियर ऑडिट असिस्टेंट एक्सेट्रा। तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ की एंगेजमेंट टीम मेंबर, engagement partner and other key member of engagement team shall be involved in planning। engagement partner and other key member of engagement team, तो फर्स्ट engagement partner, then engagement team, key engagement member of engagement team shall be involved in planning। एंड इसके लिए कुछ एडवांटेज मिलता है क्या? एंगेजमेंट पार्टनर अगर ज्वाइन करेगा एंगेजमेंट टीम को, या फिर कोई की एंगेजमेंट मेंबर अगर एंगेजमेंट टीम ज्वाइन करेगा, तो कुछ तो मिलना चाहिए। क्या है कि ड्रॉज ऑन देयर इनसाइट एंड एक्सपीरियंस एंड एनहांसेस द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑडिट। फर्स्ट हम लोग एसे 300 में जो ऑडिट का ऑब्जेक्टिव पढ़े थे, क्या था? ऑडिट to conduct an effective and efficient manner। Audit is performed in effective and efficient manner। तो अभी ऑडिट को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली करने के लिए फर्स्ट थिंग क्या ज़रूरत है, वो जब इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंगेजमेंट की एंगेजमेंट मेंबर का बात कर रहा था, तो उसमें मिल गया कि एडवांटेज क्या है कि एंगेजमेंट पार्टनर एंड की एंगेजमेंट मेंबर ऑफ एंगेजमेंट टीम शैल बी इन्वॉल्व्ड इन प्लानिंग। एंड एडवांटेज ऑफ इट, इट ड्रॉज ऑन देयर एक्सपीरियंस एंड इनसाइट एंड एनहांसेस द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ द ऑडिट। दो पॉइंट डिस्कस्ड। नाउ द थर्ड टॉपिक, डिस्कशन ऑफ एलिमेंट ऑफ प्लानिंग विथ मैनेजमेंट। डिस्कशन ऑफ एलिमेंट ऑफ प्लानिंग विथ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के साथ एंटिटीज, जो मेरा क्लाइंट है उसका मैनेजमेंट के साथ मुझे क्या क्या डिस्कस करना पड़ेगा मेरा ऑडिट प्लानिंग के बारे में। तो देखते हैं। मे बी डन टू फैसिलिटेट द कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑडिट। Discussion of element of planning with management. The auditor may be decided to discuss element of planning with management to facilitate the conduct and management of audit engagement. To facilitate conduct and management of audit engagement. Overall audit strategy
and audit plan remain the auditor's responsibility. ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान, ये दोनों चीज़ ऑडिटर बनाता है। एक क्लाइंट का, एक एंटिटी का ऑडिट करना है तो वहाँ पे ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, ऑडिट प्लान क्या होना चाहिए, ये सब ऑडिटर ही तो ठीक करेगा। एंटिटी थोड़ी पता करेगा कि ये जो मेरा कंपनी है इसमें ऑडिट करने के लिए आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है। नहीं, एकदम से नहीं, वो ऑडिटर का पार्ट है। इट्स ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एस्टैब्लिश ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान। ठीक है, तो अभी जो पॉइंट डिस्कस कर रहे थे वो था डिस्कशन ऑफ एलिमेंट ऑफ प्लानिंग विथ एंटिटीज मैनेजमेंट। ये मेरा टॉपिक है। तो ऑडिटर में डिसाइड टू डिस्कस द एलिमेंट ऑफ प्लानिंग with entities management to facilitate the conduct and management of audit engagement. But overall audit strategy and audit plan remains auditor responsibility. So while discussing matter included in the overall audit strategy or audit plan, care is required in order not to compromise the effectiveness of audit. While discussing the matter included in overall audit strategy or audit plan, auditors should take care to ensure that auditor does not compromise the effectiveness of audit. Care is required in order not to compromise effectiveness of audit. तो तीनों पॉइंट अभी डिस्कस किए। एस 300 में ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑडिट इज परफॉर्म इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर, इन्वॉल्वमेंट ऑफ की एंगेजमेंट टीम मेंबर, engagement partner and other key engagement member of engagement team shall be involved in planning. While planning, the engagement partner draws on their experience and insight and enhance the effectiveness and efficiency of the audit. And lastly, discussion of element of planning with entities management. Next, benefit of planning. Next question, benefit of planning. Benefit of planning in the audit of financial statement. अब प्लानिंग जो हम लोग कर रहे हैं एज पर ऐसे 300 प्लानिंग जो करने के लिए बोल रहा है हमारा इससे, तो उसका बेनिफिट क्या है? मतलब क्वेश्चन तो करना पड़ेगा ना कि आप बोल रहे हैं कि प्लानिंग करो, लेकिन क्यों, इससे क्या होगा? हम नहीं करें तो ऐसे ही आ जाए। ऑडिट एंगेजमेंट हुआ, हम लोग आ गए, ऑडिट कुछ भी प्लानिंग किए बिना इधर उधर से जो भी मिल रहा है ऑडिट कर रहे हैं। तो ये करें या फिर आप जो बता रहे हैं कि प्लानिंग करना चाहिए, तो ऑडिट का प्लानिंग करना चाहिए या फिर हिफाजतली ऑडिट कर लो? तो बोल रहा है कि प्लानिंग करने के लिए बोल रहा हूँ, तो उसका बेनिफिट सुन लो पहले। बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है कि एप्रोप्रिएट अटेंशन, हेल्पिंग ऑडिटर टू डिवोट एप्रोप्रिएट अटेंशन टू इम्पोर्टेंट एरियाज, helping the auditor to identify and resolve the potential problem on timely basis, helping the auditor in properly organize and manage the audit, तो तीनों बेनिफिट क्या था पहले? फर्स्ट क्या था? Devote appropriate attention to important areas. Second था identify and resolve potential problem on timely basis. Third, properly organize and manage audit engagement. Fourth पढ़ा नहीं है अभी तक। Fourth, selection of engagement team member. of engagement team member. फोर्थ बेनिफिट, प्लानिंग का अभी एक
सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर क्यों? मेरा एक ऑडिट फर्म है, उसमें 5 स्टाफ है, जिसमें से एक जो प्रीवियस जो फर्म में काम करता था उसमें उसे बैंक ऑडिट करने का एक एक्सपीरियंस है। तो अभी अगर मैं कुछ फर्म में मुझे कुछ बैंक ऑडिट करने को मिला, तो जब मैं जाऊंगा तो मैं ज़रूर उसे लेके जाऊंगा जिसके पास बैंक ऑडिट करने का एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं कि जिसके पास फुल ऑडिट करने का एक्सपीरियंस है मैं उसे लेके जाऊँ, उसे भी लेके जाऊंगा लेकिन एज ए लर्नर। लेकिन मुझे एक्सपीरियंस चाहिए उसका जो ऑडिट पहले किसी बैंक ऑडिट करके रखा है, मुझे उसका एक्सपीरियंस चाहिए। तो अभी एक सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर भी एक बेनिफिट है ऑडिट प्लानिंग का। ठीक है, तो 4 पॉइंट हो गया, 4 पॉइंट कंप्लीट। फिफ्थ, डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर एंड रिव्यू ऑफ देयर वर्क। डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर, जो भी मेरे एंगेजमेंट टीम मेंबर है उसे डायरेक्ट करेंगे, इस वे में काम करो। सुपरवाइज करेंगे कि कैसे काम कर रहा है, एंड रिव्यू करेंगे जो काम वो लोग कर चुका है। डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर एंड रिव्यू ऑफ देयर वर्क। सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर, appropriate attention to important areas, identify and resolve potential problem on timely basis। 5 पॉइंट हो गया है। सिक्स्थ, coordination of work done by auditor of component and expert। coordination of work done by auditors of component and expert। auditor of components, जैसे एक कंपनी में बहुत सारे ब्रांच होता है, तो ब्रांच में अगर मैं हेड ऑफिस का ऑडिट कर रहा हूँ और ब्रांच का ऑडिट हो चुका है पहले, तो मैं क्या करूँगा, कोऑर्डिनेट कर लूँगा जो भी ब्रांचेस का ऑडिट हुआ है वो ऑडिट रिपोर्ट के साथ। ऑडिट के रिपोर्ट के साथ अगर कुछ इनकॉन्सिस्टेंसीज मिला तो उस हिसाब से मैं कुछ प्रोफेशनल जजमेंट कर सकूँ। ठीक है, तो 6 पॉइंट क्या है, कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क डन बाय ऑडिटर ऑफ कंपोनेंट्स एंड एक्सपर्ट। तो अभी तक हम लोग 4 पॉइंट रिवाइज कर चुके हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर एज पर एस 300, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर, डिस्कशन ऑफ एलिमेंट ऑफ प्लानिंग with entities management, benefits of planning and audit of financial statement। benefits of planning में 6 पॉइंट था। ठीक है, लास्ट पॉइंट, कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क डन बाय ऑडिटर ऑफ कंपोनेंट एंड एक्सपर्ट। इतना तो हो गया। अब क्या बोल रहा है कि प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एलिमेंट्स ओवरव्यू। प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एलिमेंट्स ओवरव्यू क्या था कि preliminary engagement activities and planning activities। अब planning and audit मेन टॉपिक, planning and audit। अब planning and audit के बीच में है preliminary engagement activities and planning activities। preliminary engagement activities, और planning करने से पहले ही मुझे कुछ एक्टिविटीज देख लेना पड़ेगा, उसके बाद जो मेरा प्लानिंग एक्टिविटीज है एक्चुअल में वो देखेंगे। ठीक है, तो प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, PEA शॉर्ट फॉर्म। प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज क्या है, परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स रिगार्डिंग द कंटिन्यूअंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स रिगार्डिंग द कंटिन्यूअंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप मतलब प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट यहाँ पे जो बता रहा है कि मैं एक क्लाइंट का पिछले साल भी ऑडिट कर चुका हूँ और इस साल भी ऑडिट करने वाला हूँ, उसके पहले कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, मुझे वो क्लाइंट के साथ ये जो मेरा रिलेशन है इसको मैं कंटिन्यू करूँगा या नहीं, उसके लिए भी परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स, मुझे कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा रिगार्डिंग continuance of client relationship as required by SA 220। इंटीग्रिटी चेक करने के लिए SA 220 इंटीग्रिटी चेक करने के लिए परफॉर्म प्रोसीजर्स
as required by SA 220 uh, regarding continuance of client relationship. SA 220 इंटीग्रिटी का बात हो गई. Next will help auditor in ensuring. अच्छा, ये परफॉर्मिंग प्रोसीजर जो हम लोग कर रहे हैं इससे क्या होता है, विल हेल्प ऑडिटर इन ensuring no issues with management integrity that may affect auditor's willingness to continue the engagement. क्या हेल्प करेगा, परफॉर्मिंग प्रोसीजर अगर कर लेगा कंटिन्यूएंस के लेके, कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप के लेके कुछ परफॉर्म करना पड़ेगा, प्रोसीजर्स, कुछ प्रोसीजर अगर हम लोग परफॉर्म कर ले तो इससे क्या होगा, विल हेल्प द ऑडिटर इन इंश्योरिंग, इसलिए नो इश्यूज विथ मैनेजमेंट इंटीग्रिटी, नो इश्यूज विथ मैनेजमेंट इंटीग्रिटी दैट मे अफेक्ट the auditor's willingness to continue the engagement, that may affect the auditor's willingness to continue the engagement. Second point, evaluating compliances with ethical requirements including independence as required by SA 220. Ethical requirements, evaluating compliances with ethical requirements, evaluating compliances with ethical requirements including independence, evaluating compliances with ethical requirements including independence will help the auditor in monitoring the necessary independence and ability to perform the engagement. Evaluating compliances with ethical requirements including independence. Evaluating compliances with ethical requirements. Evaluating compliances with ethical requirements including independence as per SA 220. प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज के टाइम हम लोग फर्स्ट पॉइंट पढ़ रहे थे SA 220 कुछ फॉलो करना पड़ेगा इंटीग्रिटी को लेकर. फिर बोल रहा है कि SA 220 का एक और चीज फॉलो करना पड़ेगा, एथिकल रिक्वायरमेंट्स. इवैल्यूएट the compliances with ethical requirements including independence. It will help the auditor in maintaining the necessary independence and ability to perform the engagement. It will help the auditor in maintaining the necessary independence and ability to perform the audit, to perform the engagement. तो अभी तक 2 पॉइंट पर है, अभी उसको देखते हैं क्या क्या था. प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज SA 220, फिर SA 220, दोनों पॉइंट. एक और है फर्स्ट SA 220 इंटीग्रिटी लेके बात कर रहा है. इंटीग्रिटी SA 220 टॉकिंग अबाउट इंटीग्रिटी. क्या, परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स एज रिक्वायर्ड बाय SA 220 regarding continuance of client relationship. It will help the auditor to evaluate, to ensure no issues with management integrity that may affect auditor's willingness to continue the engagement. And second one, SA 220 talking about ethical requirements. Evaluate compliances with ethical requirements including independence as required by SA 220. It will help the auditor in maintaining the necessary independence, in order to perform the audit. Okay. Third point, SA 210, agreeing the terms of audit engagement. Establishing an understanding on terms of engagement with the client to ensure there are no misunderstandings with the client as to the terms of engagement.
Essay 210 agreeing the terms of audit engagement, establishing an understanding of terms of engagement with the client to ensure there are no misunderstanding with the client as to the terms of engagement. To ensure that no misunderstanding with the client as to the terms of engagement. हाँ, यहाँ पे एक ऑडिट में एक क्लाइंट के साथ कभी कभी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि वो लोग चाहते हैं रिव्यू, लेकिन वो लोग कहते हैं ऑडिट, और हम लोग तो जो कह रहे हैं वो सुनेंगे, जो रिटन है वो भी सुने, वो भी फॉलो करेंगे, लेकिन उन लोगों का इंटेंशन है रिव्यू कराने का। रिव्यू एश्योरेंस वो लोग चाहते हैं, लिमिटेड एश्योरेंस, SRE जिसमें फॉलो होगा, स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। ओके, फर्स्ट चैप्टर में ये था SRE। तो SA 210 क्या बोला है? एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, एस्टैब्लिशिंग एन अंडरस्टैंडिंग of terms of engagement with the client, establishing an understanding of the terms of engagement with the client। हम लोग उससे बात कर लेंगे कि आपको ऑडिट ही करवाना है या फिर रिव्यू करवाना है। आपको ऑडिट करवाना है तो ये प्रोसीजर जो भी है ये सब हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा, परफॉर्म भी करना पड़ेगा, तो आपको इसमें कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो वो लोग अगर समझ जाएंगे कि नहीं ये तो ऑडिट कुछ और ही बोल रहा है, यहाँ पे बहुत सारा प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा, लेकिन दे वांट एन एश्योरेंस विच आर acceptable, which gives assurance to a level which is acceptable. Okay, this is review assurance. Essay 210 agreeing the terms of audit engagement, agreeing the terms of audit engagement। इसमें क्या है कि ऑडिटर establish an understanding of the terms of engagement, establish an understanding of the terms of engagement with the client will help the auditor that there are no misunderstanding with the client as per terms of engagement। okay, तो ये थोड़ा अच्छा टॉपिक था, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। 3 पॉइंट प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज में है essay 220 इंटीग्रिटी, essay 220 इंडिपेंडेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स, essay 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। essay 220 क्या था? परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स एज रिक्वायर्ड बाय essay 220 रिगार्डिंग कंटिन्यूएंस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। It will help the auditor to ensure no issues with management's integrity that may affect the auditor's willingness to perform the audit, right? To continue the engagement. Second one, essay 220, auditor ethical requirements, evaluating compliances with ethical requirements, evaluating compliances with ethical requirements as required by essay 220। this will help the auditor in in maintaining the necessary independence as required by essay 220। then essay 210 agreeing the terms of audit engagement, auditor agreeing the terms of audit engagement में क्या था? establish an understanding of the terms of engagement with the client। this will help the auditor to ensure that there is no misunderstanding of the terms of audit engagement। okay, तो planning and audit इसका एक पार्ट था प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। नेक्स्ट पार्ट है प्लानिंग एक्टिविटीज। अब प्लानिंग एक्टिविटीज में क्या है? प्लानिंग एक्टिविटीज में है ओवरऑल एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड डेवलपिंग एन ऑडिट प्लान। ये दोनों पॉइंट प्लानिंग एक्टिविटीज में आता है। लेकिन अब प्लानिंग एक्टिविटीज
करने के लिए कुछ फैक्टर कंसिडर करना पड़ेगा, देखते हैं। Discuss the factor that are going to impact the nature and extent of planning activities. Nature and extent. Timing छोड़ो, timing अभी यहाँ पे नहीं है. Nature and extent of planning activities. Discuss the factor that are going to be impact the nature and extent of planning activities. Size and complexity. First, size and complexity. Yes, it's matter. अगर छोटा क्लाइंट हुआ तो उसका प्रोसीजर भी कम लगेगा, टाइम भी कम लगेगा, नेचर उसमें थोड़ा रिस्क हो या ना हो, जो भी होगा कम ही होगा, वो ऑडिट रिस्क का चांसेस कम होगा। देन कॉम्प्लेक्सिटी भी उतना नहीं होगा। छोटा कंपनी में एमलगेमेशन, मार्जर, ये सब उतना है नहीं, होता नहीं है इतना कुछ। तो साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ये अफेक्ट करता है नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ प्लानिंग एक्टिविटीज़ की एंगेजमेंट टीम मेंबर एक्सपीरियंस। अगर वो बैंक ऑडिट करने वाला लड़का जो मेरे ऑफिस में काम करता है, अगर वो ज्वाइन ही नहीं किया मेरा ऑफिस, तो अगर मुझे फिर बैंक ऑडिट मिला तो फिर मैं तो कर नहीं पाऊँगा। ऐसा तो कुछ नहीं, मुझे करना होगा लेकिन उसके बिना, ठीक है। तो की एंगेजमेंट टीम मेंबर प्रीवियस एक्सपीरियंस विद द एंटिटी। तो अगर उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस मैं इन्वॉल्व कर सकता हूँ मेरा ऑडिट में तो अच्छा रहेगा, इट विल मैटर्स। अगर वो नहीं है तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा ऑडिट में, अगर वो है तो थोड़ा आसान रहेगा। तो इनकी एंगेजमेंट टीम मेंबर्स प्रीवियस एक्सपीरियंस with the entity and change in circumstances that occur during the audit engagement। तीन चीज जो नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ प्लानिंग एक्टिविटीज को अफेक्ट करता है। साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, डिफरेंट साइज डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटी, तो डिफरेंट ऑडिट प्लानिंग। सेकेंड, की एंगेजमेंट टीम मेंबर्स प्रीवियस एक्सपीरियंस विद द क्लाइंट। थर्ड वन क्या है कि चेंज इन सर्कमस्टेंसेस दैट ऑकर ड्यूरिंग द ऑडिट एंगेजमेंट। यहाँ तक हो गया। 1 2 3 4 5 6 पॉइंट अभी तक हम लोग रिवाइज कर चुके हैं। 30 मिनट्स हुआ, ठीक है। 30 मिनट्स पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग रिवाइज कर चुके हैं, वो भी रट्टा लगा के। Audit strategy. Next topic will be audit strategy. How would the audit strategy be helpful to the auditor? Factor to be considered for establishing overall audit strategy, and then we'll discuss audit plan. Okay. Come to the next topic, audit strategy. Audit strategy क्या है? Sets meaning of audit strategy. It sets scope, timing and direction of the audit and guides the development of audit plan. Overall audit strategy is the basis of an audit plan. Planning activities का दो पार्ट है, एक है overall audit strategy and the second one audit plan. Audit plan is the overall audit strategy is the basis of audit plan. पहले overall audit strategy एस्टेब्लिश होगा, उसके बाद उसके बेसिस पे ऑडिट प्लान। नेक्स्ट टॉपिक, ऑडिट स्ट्रेटेजी में दो चीज़ ही पढ़ने का है। ऑडिट स्ट्रेटेजी पहले से समझना है कि ऑडिट स्ट्रेटेजी है क्या। तो ऑडिट स्ट्रेटेजी सेट स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट एंड गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। ऑडिट स्ट्रेटेजी का काम ये है कि सेट STD स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन। Scope, timing and direction. Overall audit strategy sets scope, timing and direction of the audit and guides the development of audit plan. This is the meaning of overall audit strategy. Again, it sets scope, timing and direction of the audit and guides in development of audit plan.
An overall audit strategy is the basis of an audit plan. ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी में सेकेंड पॉइंट है, हाउ वुड द ऑडिट स्ट्रेटेजी बी हेल्पफुल टू द ऑडिटर. ऑडिट स्ट्रेटेजी जैसे हम लोग ये पढ़े थे कि बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग, हाउ ऑडिटर विल बी बेनिफिशियल फॉर मेकिंग ए प्लानिंग ऑफ ऑडिट. तो इसमें प्लानिंग का जितना भी बेनिफिट्स है हम लोग वो पढ़े थे. 6 पॉइंट था प्लानिंग ऑफ एन ऑडिट में. अब है ऑडिट स्ट्रैटेजी जो भी है, हाउ वुड इट वुड बी हेल्पफुल फॉर द ऑडिटर. हाउ वुड द ऑडिट स्ट्रैटेजी बी हेल्पफुल टू द ऑडिटर. The process of establishing overall audit strategy assists the auditor to determine, subject to the completion of the auditor's risk assessment procedure. The process of establishing overall audit strategy assists the auditor to determine, subject to the completion of the auditor's risk assessment procedure, such matter as in ET of resources, nature, extent, timing of resources. First point, nature of resources. Resources to deploy for specific audit areas. Resources to deploy for specific audit areas. Experienced team member for high risk areas, involvement of expert. Second point, extent of resources, amount of resources to allocate to specific audit areas. For example, inventory count at key location, more resources are required. High risk areas, more resources required. Extent of review required in case of group audit. Extent of review required in case of group audit. So how would the audit strategy be helpful to the auditor? ऑडिट स्ट्रेटजी ये डिसाइड करने में हेल्प करते हैं कि नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द रिसोर्सेज, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज वो कैसे होगा. नेचर, फर्स्ट पॉइंट नेचर. नेचर ऑफ रिसोर्सेज क्या है कि रिसोर्सेज टू डिप्लॉय फॉर स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज. रिसोर्सेज टू डिप्लॉय फॉर स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज. For example, experienced team member for high risk areas and involvement of expert. Experienced team member for high risk areas, this is the nature of the engagement team member, experienced. So if we are talking about the nature of the resources, then it will be experienced and expert. The first point, nature of resources. Nature of resources. Nature of resources, resources to deploy for specific audit areas. Resources to deploy for specific audit areas. For example, experienced team member in for high risk areas and involvement of expert. Next point, extent of resources. Amount of resources to allocate to specific audit areas. Amount of resources. Extent means amount of resources. Allocate resources to allocate to specific audit areas. First point, nature of resources. Resources to deploy for specific audit areas. Resources to deploy for specific audit areas. Resources to deploy for specific audit areas. For example, involvement of experienced team member in high risk areas and involvement of expert. Next point, amount of resources. Resources, the amount of resources to allocate to specific audit areas. For example, for inventory count at key location, more resources required. In high risk areas, more resources required. Extent of review required in case of group audit. Extent of review required in case of group audit.
तो अभी तक हाउ वुड द ऑडिट स्ट्रेटजी बी हेल्पफुल टू द ऑडिटर? ऑडिट स्ट्रेटजी रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं। ऑडिट स्ट्रेटजी कैसे? नेचर बेसिस पे, एक्सटेंड के बेसिस पे, टाइम एंड मैनेजमेंट। फर्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ resources. Resources to deploy for specific audit areas. For example, involvement of experienced team member, experienced team member in high risk areas, involvement of expert, and secondly, uh, extent of resources. It explains the amount of resources to allocate to specific audit areas, such as inventory count at key location, more resources required. High risk areas, more resources required. Extent of review required in case of group audit. Next point, time of resources. When these resources are to be deployed. When these resources are to be deployed. Like interim audit stage or at key cutoff dates. Interim audit stage or at key cutoff stage. Time of resources. When these resources are to be deployed at interim audit stage or at key cutoff dates. Interim audit stage or key cutoff dates. This is time of resources. And the next point and the last one, management of resources. How such resources are managed, directed and supervised. How such resources are managed, directed and supervised. For example, timing of team briefing and debriefing meetings, engagement partner and manager review on-site or off-site, decision on conducting engagement quality control. Management of resources. How such resources are managed, directed and supervised. For example, timing of team briefing and debriefing meetings, decision on conducting engagement quality control review, engagement partner and manager review. There are 4 points. How would our strategy be helpful to the auditor? The process of establishing overall audit strategy assists the auditor to determine such matter as nature of resources, extent of resources, time of resources and management of resources. In short, NETM of resources. First point, nature of resources. Resources are to be deployed to specific audit areas such as experienced team member in high risk areas, involvement of expert. Second one, in, extent of resources, amount of resources to be allowed to allocate to specific audit areas. For example, for inventory counts at a key location, more resources required. In high risk areas, more resources required. Third one is timing of resources. When these resources are to be deployed. When these resources are to be deployed. When these resources are to be deployed. When these resources are to be deployed at interim audit stage or at key cutoff dates. Management of resources. How such resources are managed, directed and supervised. Like team briefing and debriefing meetings, decision on conducting audit engagement, quality control review, etc. Audit strategy. Meaning of audit strategy. Meaning of audit strategy sets scope, timing and direction of
audit engagement and developing an audit plan, and guides in developing an audit plan. Audit strategy is a basis for audit plan. This is the meaning of overall audit strategy. Second, how would the audit strategy helpful to the auditor? First point, nature of resources. Second one, extent of resources. Third one, time of resources. And the last one, management of resources. How auditor uses the resource, how such resources are managed, directed and supervised. Time of resources, when these resources are to be deployed at interim audit stage or at key cut-off dates. Second point complete. Now the third point of overall audit strategy. Factor to be considered for establishing overall audit strategy. Next topic. Factor to be considered for establishing overall audit strategy. Audit strategy planning एक्टिविटीज का पार्ट है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान. ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी का अभी तक हम लोग 2 पॉइंट पर, एक है मीनिंग, सेट स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट एंड गाइड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान. नेक्स्ट, हाउ वुड ऑडिट स्ट्रेटेजी बी हेल्पफुल टू द ऑडिटर. Nature, time and extent and management of the resources are the answer. Next, factor to be considered while establishing overall audit strategy. There are 5 points. एक एक करके डिवाइड करते हैं. एक शॉर्ट फॉर्म है इसका CSROETEPEAOE, Entity of Resources. CS. First point, CS, characteristics and scope. Next, RO, CS, RO, reporting objectives. ETE, engagement team's effort. PEAOE, PEA, preliminary engagement activities. OE, other engagement activities. Entity of resources, nature, time and extent of resources. These are the 5 points. अब क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि ये 5 फैक्टर कौन सा फैक्टर का कंसिडर करना पड़ेगा. तब मुझे ऐसा शॉर्ट फॉर्म तो नहीं लिखना पड़ेगा, बहुत पूरा सेंटेंस में लिखना होगा. आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट दैट डिफाइन इट्स स्कोप. CS का है. आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंगेजमेंट दैट डिफाइंस इट्स स्कोप. सेकेंड वन, ascertain reporting objective to plan timing and nature of communication. Third, factor that an auditor would consider in directing the engagement team's effort. Fourth, result of preliminary engagement activities and knowledge gained on other engagement. Fifth, nature, timing and extent of resources. Ascertain the nature, time and extent of resources necessary to perform the engagement. एक एक करके छोटा छोटा एक बार देख लेते हैं क्या क्या है इसमें. फर्स्ट पॉइंट, आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट दैट डिफाइन इट्स स्कोप. आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंगेजमेंट. आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंगेजमेंट दैट डिफाइन इट्स स्कोप. 4 एग्जाम्पल है इसका. AFRF applicable to entity. AFRF applicable to entity. Nature of business segment. Industry specific reporting requirements. Expected use of audit evidence obtained in previous audit. First, AFRF applicable to entity. Nature of business segment. Industry specific reporting requirements, expected use of audit evidence obtained in previous audit. फिर से, identify characteristics of an engagement that define its scope. Identify
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंगेजमेंट दैट डिफाइन इट्स स्कोप। अब इसका एग्जांपल क्या है? AFRF एप्लीकेबल टू द एंटिटी, applicable financial reporting framework applicable to the entity, nature of business segment, industry specific reporting requirements, expected use of audit evidence obtained in previous audit, expected use of audit evidence obtained in previous audit। फिर से एक बार, 4 एग्जाम्पल है। फर्स्ट पॉइंट, फैक्टर टू बी कंसिडर व्हाइल एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी। फर्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्कोप, CS। अब इसका पूरा सेंटेंस में क्या होगा? आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंगेजमेंट दैट डिफाइन स्कोप। अब इसके अंदर 4 एग्जाम्पल, फर्स्ट के अंदर 4 एग्जाम्पल। 4 एग्जाम्पल क्या है? AFRF एप्लीकेबल टू द एंटिटी, second, nature of business segment, third, industry specific requirements, industry specific reporting requirements, fourth, expected use of previous audit evidence, expected use of previous audit evidence obtained in previous year। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया फैक्टर। अभी इसका 4 और बाकी है। सेकेंड, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, CS हो गया, कैशेस एंड स्कोप। अब है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव का पूरा सेंटेंस क्या? ascertain रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव टू प्लान टाइमिंग एंड नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। टाइमिंग एंड नेचर, टाइमिंग एंड नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, टाइमिंग एंड नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। ascertain reporting objective to plan, ascertain reporting objective to plan timing and nature of communication। इसे कब कम्युनिकेशन करना है, किसके ऊपर कम्युनिकेशन करना है, इसके बारे में बात करता है। ascertain reporting objective of the audit to plan timing and nature of communication, ascertain reporting objective to plan timing and nature of communication। Example, entities timetable for reporting, entities timetable for reporting, organizing meeting with management to discuss scope and timing, organizing meeting with management to discuss scope and timing। Third, discussion with management regarding type and timing of report, discussion with management regarding type and timing of report। Communication regarding audit status, internal team communication, how the audit team will communicate internally, timing of meeting and review। There are 5 points of RO, reporting objective, ascertain reporting objective to plan timing and nature of communication। Example, entities timetable for reporting, organizing meetings with management। First, entities timetable for reporting, entities timetable for reporting। Second, organizing meeting with management to discuss scope and timing, scope and timing। So entities timetable for reporting। Second one, organizing meetings with management to discuss scope and timing। Third one, discussion with management regarding type and timing of report, discussion with management about regarding type and timing of reports। टाइप मतलब नेचर। अभी फर्स्ट लाइन में जो पढ़े थे कि ascertain reporting objective of audit, reporting objective to plan timing and the nature of audit engagement, report nature of communication। First point, entities timetable for reporting। Second one, business organizing meetings
with management to discuss scope and timing. Then again discussion with management regarding type and timing of report. Communication regarding audit. Fifth one, internal team communication. How the audit will communicate internally. How the audit team will communicate internally. Timing of meeting and review. Timings of meeting and review. Timing of meetings and review. Third one, engagement team's effort. Factor that an auditor should consider. Factor that an auditor should consider in directing engagement team's effort. Factor that are considered that the auditor should consider in directing engagement team's effort. Volume of transaction, reliance on IC to be placed or not, significant industry development. As changes in industry regulation and new reporting requirements, changes in the financial reporting framework such as changes in accounting standard, changes in financial reporting framework, other significant relevant development, changes in legal environment affecting the entity. Okay. First factor to be considered. First topic main heading क्या था? Factor to be considered while establishing overall audit strategy of an engagement. तो शॉर्ट फॉर्म था कुछ CSRO, ETE, PEAOE, NET of resources. First CS, characteristics and scope. Ascertain the characteristics of the engagement that define its scope. इसका 4 एग्जाम्पल था. Applicable to AFRF, applicable to the entity. Second, nature of business segment. Third one, industry specific reporting requirements. Fourth one क्या था? Reporting हो गया. Expected use of audit evidence obtained in previous audit. CS complete. अब है RO, reporting objective. Ascertain reporting objective to plan timing and nature of communication. First point क्या था? Entities timetable for reporting. Second one, organizing meetings with management to discuss scope and timing of report. Discussion with management regarding type and timing of reports. Communication regarding audit evidence, audit status, and internal team communication. How the audit team will communicate internally and timing of meeting and review. Engagement team's effort. Next one, factor to be considered while in directing engagement team's effort. Volume of transaction, significant industry development, changes in FRF, financial reporting framework, and other significant relevant development. 4 point, volume of transaction, significant industry development, and first one, volume of transaction, significant industry development. दूसरा हो गया. थर्ड है changes in the financial reporting framework, changes in AFRF, changes in FRF, other significant relevant development, okay. ETE complete. Now the question is preliminary engagement activities and other engagement. Result of preliminary engagement activities and knowledge gain on other engagement. Result of preliminary engagement activities and knowledge gain on other engagement. Heading क्या है? Result of preliminary engagement activity and other engagement. Preliminary engagement activities, other engagement. इसका सेंटेंस क्या है? Result of preliminary engagement activities and knowledge gain on other engagement. Result of preliminary engagement activities and knowledge gain on other engagement.
प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, इसका क्या था, ऐसे 220, 220 एंड 210. 220 फॉर इंटीग्रिटी, evaluate ethical compliances and agreeing the terms of audit engagement, preliminary engagement activities, and knowledge gain on other engagement. इसका 3 एग्जाम्पल है. रिजल्ट ऑफ प्रीवियस ऑडिट, प्रीवियस इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, कम्युनिकेशन ऑफ डेफिशिएंसी. Result of previous audit, previous evaluation of IC, communication of deficiencies in IC and action on those. First, result of previous audit, previous evaluation of IC. Result of previous audit, previous evaluation of IC. Result of previous audit, previous evaluation of IC, and communication on deficiencies of IC and action on those. Previous evaluation of IC, result of previous audit, and communication of deficiency in IC and action on those. And the last one, nature, time and extent of resources. Ascertain the nature, time and extent of resources necessary to perform the engagement. Selection of ET and assignment of audit work to team member is a significant factor in establishing overall audit strategy. Experienced team member and more time are allocated to areas where ROMOM is high. Ascertain the nature, timing and extent of resources necessary to perform the engagement. Selection of engagement team and assignment of audit work to team member is a significant factor. Selection of engagement team and allocation of audit work and assignment of audit work to team member is a significant factor in establishing overall audit strategy. तो फैक्टर टू बी कंसिडर व्हाइल एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी 5 पॉइंट CSROETE, PEAOE and last one NET of resources. Okay. CS characteristics of identify the characteristics of an engagement that define its scope. Second one, ascertain reporting objective to plan timing and nature of communication. Third one, factor to be considered while directing engagement team's effort. Fourth, थर्ड वाला में क्या था वो, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट, क्या था, सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री डेवलपमेंट, चेंजेस इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री डेवलपमेंट, और क्या था, चेंजेस इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड अदर सिग्निफिकेंट रिलेवेंट डेवलपमेंट. 4 पॉइंट. चेंजेस इन FRF, अदर सिग्निफिकेंट रिलेवेंट डेवलपमेंट्स. डेवलपमेंट के ऊपर 2 पॉइंट, सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स, रिलेवेंट डेवलपमेंट, चेंजेस इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. Fourth one, preliminary engagement activities and other engagement, result of previous audit, previous evaluation of internal control, communication on deficiencies of internal control and action on those. Fifth and last one, nature, timing and extent of resources. Okay. Audit strategy, overall audit strategy का 3 पॉइंट था. मीनिंग, फर्स्ट मीनिंग, सेकेंड how would audit strategy be helpful to the auditor, and third one, factor to be considered while establishing overall audit strategy. Audit strategy complete. अब planning activities का second part क्या है? Second part, audit plan. Audit plan is more detailed than the overall audit strategy that include the nature, time and extent of audit procedure to be performed by ET members. ET members, engagement team member. Okay. So what is audit plan? Audit plan is more detailed than overall audit strategy that includes
नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म बाय ईटी मेंबर्स। सिंपल चीज है, ऑडिट स्ट्रेटेजी क्या था? सेट्स स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम्स एफर्ट और ऑडिट एंगेजमेंट, ऐसा कुछ ना गाय है। और डायरेक्शन ऑफ ऑडिट एंड गाइड्स इन डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। तो ऑडिट स्ट्रेटेजी गाइड्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान एंड इट सेट्स स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन। अब ऑडिट प्लान क्या है कि ऑडिट प्लान इज मोर डिटेल्ड देन overall audit strategy that includes nature, timing and extent of audit procedure performed by the engagement team members। क्या क्या है? ऑडिट प्रोसीजर जो एंगेजमेंट टीम मेंबर परफॉर्म करने वाला है वो सबका नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट। अब ऑडिट प्रोसीजर क्या क्या है? एक रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर होता है रैप, और एक फर्दर ऑडिट प्रोसीजर रिस्पॉन्स। जो रिस्क असेसमेंट है उसके रिस्पॉन्स में फर्दर ऑडिट प्रोसीजर किया जाता है। तो द एनिटी ऑफ प्लान्ड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एज पर एसे 350, एनिटी ऑफ प्लान्ड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर असेसमेंट एज एसे 330, and other planned audit procedure required to be carried out so that engagement complies with SS। ये ऑडिट प्लान का डेफिनेशन। अब ऑडिट ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी रेडी है, ऑडिट प्लान भी रेडी है, लेकिन कभी कभी बीच बीच में कुछ चेंजेस करना पड़ता है। जैसे हम लोग प्लानिंग करते हैं लेकिन कुछ ऐसा सर्कमस्टेंसेस ऑकर कर जाता है जिससे मुझे प्लान में थोड़ा चेंजेस लाना पड़ता है। तो सेम एज हियर, चेंजेस इन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान। क्या बोल रहा है कि ऑडिटर शैल अपडेट एंड चेंज द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान एज नेसेसरी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट एज a result of unexpected event, changes in condition, audit evidence obtained from result of audit procedure। ये तीनों चीज as a result of during the course of the audit as a result of unexpected event, changing condition or audit evidence obtained from the result of audit procedure। For example, revise consideration of assess risk। ऐसा करके तीन एग्जाम्पल है। तो चेंजेस इन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान तीन रीजन की वजह से किया जाता है। अनएक्सपेक्टेड इवेंट, चेंज इन सर्कमस्टेंसेस और कंडीशन, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिजल्ट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर। अब इसके बाद जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, रिलेशनशिप ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इट। और तो दोनों का ही डॉक्यूमेंटेशन तो सब कुछ करना पड़ता है, हर एक चीज़ का। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्लान, इन तो दोनों का डॉक्यूमेंटेशन करना है। फिर ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान ये कंटिन्यूस प्रोसेस है या फिर डिस्क्रीट फेज है, ये भी डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट वन, एडिशनल कंसिडरेशन इन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। एडिशनल कंसिडरेशन इन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। अभी हम लोग जो प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट पढ़ रहे थे तो उसमें था एसे 220 में इंटीग्रिटी को लेके कि परफॉर्म्ड प्रोसीजर्स एज रिक्वायर्ड बाय एसे 220 रिगार्डिंग कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। कंटिन्यूएंस मतलब पिछले साल भी ऑडिट किए थे उनका, इस साल भी करेंगे। तो इस साल क्या कुछ इंटीग्रिटी में कुछ इशू है जो में अफेक्ट द ऑडिटर्स विलिंगनेस टू परफॉर्म द ऑडिट। उस हिसाब से इनिशियल ऑडिट के अगर मैं फर्स्ट टाइम किसी एंटिटी का ऑडिट करने जा रहा हूँ तो उस टाइम पे मुझे इनिशियली और क्या प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा। तो दिस आर द टॉपिक। अभी भी मेरे पास अभी रिलेशनशिप, डॉक्यूमेंटेशन, प्लानिंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड फोर्थ वन एडिशनल कंसिडरेशन। फिर चैप्टर 2 का हाफ कंप्लीट होगा। ठीक है, आई विल टेक 5 मिनट्स ब्रेक। तो चलो शुरू करते हैं। ऑडिट प्लान तो रिवाइज किए थे। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी सेज स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन एंड गाइड इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। अब ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी ने ऑडिट प्लान डेवलप करने के लिए गाइड कर दिया। अब ऑडिट प्लान है क्या?
Audit plan is more detailed than overall audit strategy that includes nature, timing, and extent of audit procedure to be performed by ET members. Audit plan is more detailed than overall audit strategy that includes nature, timing, and extent of audit procedure to be performed by engagement team members. फिर एक बार ऑडिट प्लान क्या कर रहा है? ऑडिट प्लान इज मोर डिटेल्ड देन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी. इट इंक्लूड्स नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म बाय ईटी मेंबर्स. अब ऑडिट प्रोसीजर क्या क्या है? इसमें दो टाइप का मेनली ऑडिट प्रोसीजर है. एक रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड देन फर्दर ऑडिट प्रोसीजर. और एसएस के रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के लिए है अदर ऑडिट प्रोसीजर्स. फर्स्ट, द नेचर, एक्सटेंट एंड टाइमिंग ऑफ planned risk assessment procedure as per SA 315. Planning of auditor's risk assessment procedure occurs early in the audit process. NET of planned risk assessment procedure as per SA 315. Planning of the auditor's risk assessment procedure. Planning of auditor's risk assessment procedure occur early in the audit process. Early in the audit process. ये जो ऑडिटर का जो प्लानिंग है रैप को लेकर, इट ऑकर्स अर्ली इन ऑडिट प्रोसेस. फिर से एक बार ऑडिट प्लान का वो जो था, क्या था ऑडिट प्लान का मीनिंग समझ लेते हैं. ऑडिट प्लान इज मोर डिटेल्ड देन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी. इट इंक्लूड्स नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी. नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म बाय ईटी मेंबर्स. अब तीनों जो ऑडिट प्रोसीजर है उसका क्या? फर्स्ट पॉइंट, नेचर, एक्सटेंट एंड टाइमिंग ऑफ प्लान्ड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एज पर SA 315. प्लानिंग ऑफ ऑडिटर्स रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर इज अर्ली ऑडिट प्रोसेस. Planning of the auditor's risk assessment procedure occur early in the audit process. Next, the nature, extent and timing of planned further audit procedure at assertion level as per SA 330. Planning the nature, timing and extent of specific further audit procedure depends on the outcome of risk assessment procedure. तो फर्स्ट हम लोग as per SA 315 रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कर रहे हैं. रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कर रहे हैं, उसका तो कुछ रिजल्ट निकलेगा, रिजल्ट आउटकम जो भी होगा उसके ऊपर हम लोग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करेंगे. तो अगर फर्स्ट से शुरू करें, ऑडिट प्लान इज मोर डिटेल्ड देन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी. इट इंक्लूड्स नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म्ड इन ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म्ड बाय ईटी मेंबर्स. ओके, अब ये बोल दिया कि ऑडिट प्रोसीजर मुझे परफॉर्म करना है. नेचर, एक्सटेंट एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर. नेचर, एक्सटेंट एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर. अब ऑडिट प्रोसीजर अगर में घुसेंगे तो एनईटी ऑफ रिस्क, प्लान्ड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एज पर SA 315. प्लानिंग ऑफ ऑडिटर्स रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर ऑकर अर्ली इन द ऑडिट प्रोसेस. हो गया खत्म. नेक्स्ट है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर. फर्दर ऑडिट प्रोसीजर क्या बोल रहे हैं? नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ further audit procedure at assertion level as per SA 330. Planning the nature, timing and extent of further audit procedure at assertion level depends on the outcome of risk assessment procedure. Normally it depends on the outcome of risk assessment procedure. दोनों पॉइंट हो गया. थर्ड पॉइंट, अदर ऑडिट प्रोसीजर जो हम लोग बात कर रहे थे पहले. अदर planned audit procedure required to be carried out so that engagement complies with SS. ये फॉलो क्यों कर रहे हैं हम लोग? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कर ले, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर कर ले, अब OF क्यों? OF मतलब अदर ऑडिट प्रोसीजर क्यों कर रहे हैं? टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ SA. तो इसको अच्छे से क्या बोलेंगे? other planned audit procedure required to be
performed so that engagement complies with SA. So that engagement complies with SA. Required to be performed so that engagement complied with SA. अब ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी क्या है? ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी सेट्स स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन of the audit engagement, and it guides in development of audit plan. ये ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी का मीनिंग हो गया. सेकेंड पॉइंट, हाउ वुड ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी विल हेल्प द ऑडिटर. कैसे हेल्प करेगा? इट विल हेल्प बाय performing nature, timing and extent of resources, nature, timing, extent and management of resources. These are the 4 points. By this way it will help the auditor. Next point, factor to be considered while establishing overall audit strategy. Factor to be considered, तो 5 फैक्टर था. identify and assessing the overall identify and assess the characteristics that define its scope, ascertain reporting objective. रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव किसके साथ कनेक्टेड था? वो रिक्वायर्ड टाइमिंग and type of report, and then engagement teams effort, directing engagement teams effort, considering pre-engagement activities and other activities, and lastly unity of resources. These are the 5 factors to be considered while establishing overall audit strategy. अब प्लानिंग एक्टिविटीज एकदम पहले चले जाए तो प्लानिंग एक्टिविटीज के अंदर था ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान. ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी हम लोग डिस्कस करते हैं, अभी ऑडिट प्लान हम लोग डिस्कस कर रहे थे. ऑडिट प्लान का जितना भी मीनिंग है वो हम लोग समझ गए. क्या है ऑडिट प्लान की मोर डिटेल्ड देन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी. इट इंक्लूड्स नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर to be performed by ET members. ET members में engagement team members. Okay. अब ऑडिट प्रोसीजर तो हम लोग कह दिया. अब क्या क्या है कि एनी ऑफ प्लान्ड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर इज रिक्वायर्ड बाय 315 SA 315. प्लानिंग ऑफ ऑडिटर्स रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर occur early in audit process. Next, NAT of further audit procedure at assertion level as per SA 330. Planning of nature, timing and extent of further audit procedure at assertion level depends on the outcome of the risk assessment procedure. Third one, other planned audit procedure required to be performed in order that engagement complies with SA. Audit plan का ये हो गया. अब ऑडिटर एंगेजमेंट के बाद प्लानिंग कर रहा है. इसे 300 क्या बोल रहा है? प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट. ओके. अब प्लानिंग कर रहा है तो ऐसा नहीं कि जो अभी प्लानिंग कर रहा है वही सही होगा, इधर उधर तो हो ही सकता है. मतलब चेंजेस तो कुछ आ ही सकता है. जैसे हम लोग कुछ भी रूटीन बनाते हैं तो उसमें थोड़ा चेंजेस करना पड़ता है क्योंकि रूटीन डजंट लुक लाइक ए रिजिड वन. ओके. तो ऐसे ही जो प्लानिंग होता है उसमें कुछ ऐसा सर्कमस्टेंसेस राइज होता है जिसके लिए मुझे ओवरऑल स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान मुझे रिवाइज करना पड़ता है, चेंजेस करना पड़ता है उसमें. तो वो भी एक टॉपिक है जो मैंने 5 मिनट ब्रेक के बाद बोला था कि डिस्कस करेंगे. तो वही अभी डिस्कस कर लेते हैं कि चेंजेस इन ओवरऑल स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान. क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं कि कुछ केस स्टडीज में ऐसे उठा देगा कि प्लानिंग कर रहा था ऑडिटर, वो तो एंटिटी जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है उसमें कुछ मेजर कॉम्प्लाइंसेस में चेंजेस आ गया है, मेजर चेंजेस इन द लॉ एंड रेगुलेटरी कॉम्प्लाइंस में, लेकिन एंटिटी उसको फॉलो नहीं किया जो पिछले साल था उस हिसाब से अपना फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया है. तो एज देयर आर सम सिग्निफिकेंट चेंजेस इन लॉ एंड रेगुलेशन, it should be considered while establishing overall audit strategy and audit plan. तो जब तक नॉलेज नहीं था उस टाइम पे एक ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान बनाया. जब वो नॉलेज हुआ मैं उस हिसाब से कि हाँ ये चेंजेस हुआ है तो मुझे फिर से वो चेंजेस करना पड़ेगा. तो क्वेश्चन का आंसर भी उस तरह लिखना पड़ेगा. अभी हम लोग डिस्कस करेंगे चेंज इन OAS एंड AP. OAS क्या है? ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एंड AP ऑडिट
Planning. Audit plan. The auditor shall update and change the overall audit strategy and the audit plan as necessary during the course of the audit as a result of क्या the auditor shall update and change the overall audit strategy and the audit plan as necessary during the course of audit. कभी तो तभी तो चेंज करना है. एन ऑडिटर शैल अपडेट एंड चेंज द ओवरऑल strategy and audit plan as necessary during the course of audit as a result of. क्यों चेंज कर रहे हैं? ECE unexpected event unexpected event. C for changes in circumstances or condition, changes in condition or circumstances. C again. E audit evidence obtained that are different from result of audit procedure performed. हाँ, तो there are three significant causes for which overall audit strategy and audit plan will be changed by the auditor as necessary during the course of audit. क्या क्या है? Unexpected event, change in condition, audit evidence obtained from the audit procedure from result of audit procedure. अब इसका कुछ एग्जाम्पल है, चेंजेस जो भी हो रहा है इसका कुछ एग्जाम्पल ऐसा है कि information comes to the auditor attention. Information comes to the auditor attention that differ significantly from the information available when the auditor planned the audit procedure. फिर से एक बार एग्जाम्पल पढ़ते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल ऐसा है, रिवाइज्ड कंसिडरेशन ऑफ एसेस रिस्क. एग्जाम्पल अगर पूछ लिया तो रिवाइज्ड कंसिडरेशन ऑफ एसेस रिस्क. information comes to the auditor's attention that differ from the information available when the auditor planned the audit procedure. So information comes to the auditor's attention differ significantly from the information available when auditor planned the audit procedure. Okay, दोनों एग्जाम्पल हुआ. रिवाइज्ड कंसिडरेशन of assessed risk and information comes to the auditor's attention. Differ significantly from the information available when the auditor planned the audit procedure. And the last one, performance of substantive procedure may contradict the audit evidence obtained through test of control. Performance of substantive procedure may contradict audit evidence obtained through test of control. तो तीनों एग्जाम्पल कंप्लीट. चेंजेस इन ओएस एंड एपी, ये वाला टॉपिक रिवाइज हो गया. नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान. इतना तो याद है कि पहले ऑडिटर ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एस्टेब्लिश करेगा, उसके बाद ही ऑडिट प्लान बनाएगा. क्योंकि ऑडिट ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी सेट्स द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन एंड गाइड इन डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान. ऑडिट प्लान बनाने के लिए जो गाइड करता है वो ऑडिट स्ट्रेटेजी. एंड ऑडिट प्लान इज मोर डिटेल्ड देन overall audit strategy. It includes NET of audit procedure to be performed by ET members. हो गया. ये इतना रिलेशन हम लोगों का आता है, लेकिन एग्जाम में ये नहीं चलेगा. क्या चलेगा? पढ़ते. ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी डील्स विथ स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट. इतना आता है. ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी डील्स विथ स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट. STD सेट स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन. Deals with scope, timing and direction of audit. Audit plan includes nature, timing and extent of risk assessment procedure, further audit procedure and other planned audit procedure as
required by SS. Audit strategy is broad while audit plan is detailed. एक broad है, एक detailed है. Audit strategy is the basis of audit plan, or we can say that audit plan is made on the basis of overall audit strategy. Audit plan is made on the basis of audit strategy. They are not sequential or discrete. They are not sequential और डिस्क्रीट. ऐसा नहीं कि पहले ओवरऑल स्ट्रेटजी होगा, वो खत्म होगा, फिर ऑडिट प्लान आएगा. नहीं, ऑडिट स्ट्रेटजी बनाते बनाते हम लोग ऑडिट प्लान बना सकते हैं. ऑडिट प्लान बनाते बनाते फिर से ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी कुछ एस्टेब्लिश करेंगे हम लोग. स्कोप में शायद चेंजेस आ जाए, डायरेक्शन में चेंजेस आ जाए, तो फिर से ऑडिट स्ट्रेटजी और फिर ऑडिट प्लान. ऐसा नहीं कि पहले ऑडिट स्ट्रेटजी उसके बाद ऑडिट प्लान उसके बाद कोई और एक प्रोसीजर. ऐसा कुछ सीक्वेंस नहीं है और कोई डिस्क्रीट फेज भी नहीं है ये. दे आर क्लोजली इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. चेंज इन वन विल लीड टू चेंज इन अदर. Change in one will lead to change in other. Okay. As audit plan is detailed, while we are obtaining audit evidence from performing audit procedure, either research procedure or further audit procedure, some information may come to the auditor's attention that differs significantly from the information available when auditor planned the audit procedure. Okay. So, for this reason, audit procedure, audit strategy and audit plan is not sequential and discrete. They are closely interrelated and change in one will lead to change in other. Relationship भी हो गया. चेंज इन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान ये भी हो गया है. ऑडिट प्लान को हम लोग समझ लिए हैं, ऑडिट स्ट्रेटजी समझ लिए हैं. अब है कि ये जो बार बार बोल रहे हैं ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन, फिर एंगेजमेंट टीम मेंबर को डीएसआर करना. डीएसआर क्या है कि डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू. एंगेजमेंट टीम को तो मुझे डायरेक्ट करना पड़ेगा कि यहाँ पे तुम वो काम देखो, ये तुम वो काम देखो. तो सेगमेंटेशन होगा, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी. मेरा अपना ऑडिट टीम है, मैं इसको बोलूँगा तू वाउचर चेक कर, तू जीएसटी के जितना सारा बिल है वो निकाल, तो अकाउंट्स में जितना सारा सेल है जिसमें 18% है वो सब निकाल. तो उस हिसाब से मैं क्रॉस वेरिफिकेशन भी कर सकूँगा, जो इसमें है उसमें नहीं है, उसमें है इसमें नहीं है, ऐसे करके. तो डायरेक्शन वो एक है. सुपरविजन, वो काम ठीक से कर रहा है कि नहीं. 18% ही उठा रहा है ना, 12% तो नहीं उठा रहा है, और वो सेल ही उठा रहा है ना, परचेस तो नहीं उठा लिया. सुपरविजन एंड रिव्यू. उसके बाद जो मेरा ऑडिट असिस्टेंट ने काम किया, जो एंगेजमेंट मेंबर ने काम किया है, तो मुझे वो वर्क मुझे रिव्यू करना पड़ेगा. ओके. यहाँ पे क्या बोल रहा है? द ऑडिटर शैल प्लान द एनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड द ऑडिटर शैल प्लान द एनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ ईटी मेंबर एंड द रिव्यू ऑफ देयर वर्क. डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ ईटी मेंबर एंड रिव्यू ऑफ देयर वर्क. ओके. अब इसमें भी कुछ फैक्टर कंसिडर करना पड़ेगा. एरिया एंड कॉम्प्लेक्सिटी, एरिया ऑफ द ऑडिट, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, एरिया ऑफ द ऑडिट, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज ऑफ द एंगेजमेंट टीम मेंबर, इंडिविजुअल टीम मेंबर परफॉर्मिंग द ऑडिट, एसेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, एसेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, एसेस रोमम. तो भाई जल्दी से एक चीज़ देख लो. डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू ऑफ ऑडिट, एंगेजमेंट टीम जो भी है, ऑडिटर शैल प्लान द एनिटी ऑफ, ऑडिटर शैल प्लान द नेचर, एक्सटेंट एंड टाइमिंग ऑफ डायरेक्शन, सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर एंड रिव्यू ऑफ देयर वर्क. एंड व्हाइल दिस द फैक्टर विल बी कंसीडर क्या करना, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी. फिर एक तो ऑडिटर का कुछ था, एरिया ऑफ द ऑडिट. थर्ड वन, एसेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, एसेट रोमम जो भी है शॉर्ट फॉर्म. फोर्थ वन, कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज ऑफ इंडिविजुअल टीम मेंबर परफॉर्मिंग द ऑडिट. इतना तक पूरा झक्कास. ठीक है. अब बना तो रहे सब कुछ, डॉक्यूमेंट भी कर ले, ये तो खो जाएगा ना डॉक्यूमेंट्स. ओवरऑल
Audit strategy. A record of the key decision considered necessary to properly plan the audit and communicate significant matter to engagement team. An audit plan. Record of the proper planning of the audit procedure that can be reviewed and approved prior to the performance that can be reviewed and approved prior to the performance. Audit plan, record of the proper planning of the audit procedure and significant changes made during the audit engagement to the overall audit strategy or audit plan. The reason for such changes, ये मैं document कर रहा हूँ. Significant changes made during the audit engagement to the overall audit strategy and audit plan, and reason for such changes. Explain why such changes were made and the overall strategy audit plan finally adopted for the audit. And also reflect appropriate response to significant changes occurring during the audit. Documentation complete. हो गया. अब प्लानिंग इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस. जो हम लोग पहले बता रहे थे ओवरऑल स्ट्रेटजी ऑडिट प्लान का रिलेशनशिप के लिए कि दे आर क्लोजली इंटर रिलेटेड एंड वो चेंजेस वन में लीड टू चेंजेस अनदर. Planning is a continuous process. Planning is not a discrete phase of an audit but a continual and iterative process. It begins shortly after the completion of previous audit and continue until the completion of current audit engagement. Planning, however, includes consideration of timing of certain activities prior to the performance of further audit procedure. Prior to the performance of further audit procedure. It includes analytical procedure to be used as a risk assessment procedure. A risk to be applied as risk assessment procedure, obtaining a general knowledge, general understanding of legal and regulatory framework of the entity and applicable to the entity and how the entity is complying and how the entity is complying with the framework. Determination of materiality, involvement of expert, performance of other rep. Planning is a continuous process. Complete. Additional consideration in initial audit engagement. Purpose and objective same. इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट के लिए ये जो बोला ना पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव सेम, तो हम लोग प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज पढ़े थे. प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज इस चैप्टर में, चैप्टर 2 में स्टार्टिंग में क्या था, शॉर्ट फॉर्म क्या था, SA 220 इंटीग्रिटी, SA 220 इवैल्यूएशन ऑफ एथिकल रिक्वायरमेंट्स एंड SA 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट. अब फर्स्ट था SA 220 इंटीग्रिटी को लेकर, परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स एज रिक्वायर्ड बाय SA 220 रिगार्डिंग द कंटिन्यूअंस ऑफ और क्लाइंट रिलेशनशिप विद क्लाइंट. अब कंटिन्यूअंस ये इनिशियल नहीं है मेरा, फर्स्ट ईयर मैंने ऑडिट किया है, अब सेकेंड ईयर चल रहा है तो कंटिन्यूअंस होगा. इसमें क्या देख रहा है कि there is no issue with the management integrity that may affect the auditor's willingness to discontinue the audit or to perform in a procedure. Okay, तो क्या है कि need to expand the planning activities because no more previous experience. Need to expand the audit planning activities, performing procedure required by SA 220 regarding the acceptance, performing procedure required by SA 220 regarding acceptance, communicating with the predecessor auditor, communicating with the predecessor auditor जो हम लोग पहले जो ऑडिट करता था. मैं इस साल आया ना, मैं इनिशियल एंगेजमेंट में हूँ, तो communicating with the predecessor auditor where there has been a change of auditor, where there has been a change of auditor. The other procedure required by the firm system of quality control for initial and audit engagement, for example, review of the overall strategy by senior partner before starting the audit. Other procedure required by the firm system of quality control for initial audit engagement, for example, review of the overall strategy by senior partner before starting the audit. Third one क्या था, other procedure required by the firm system of quality control and for initial audit engagement. Other procedure required by the firm system of quality control for initial audit engagement. Other procedure required by the firm system
of quality control for initial audit engagement. Other process required by the firm system of quality control for the acceptance of for the initial audit engagement. Additional consideration, तो यहाँ तक ऑडिट का चैप्टर 2 का हाफ रिवीजन कंप्लीट. ओके